दोस्तों अगर आप भी एक डेटा एनालिस्ट एस्पायरेंट हैं और इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम रेगुलर जॉब अपडेट से हटकर बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की रिलेटेड टू एक्सेल। डेटा एनालिसिस में एक्सेल एक ट्रेडिशनल टूल है जो कि बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है इन एवरी सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, एफएमसीजी, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस। तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे टॉप 10 एक्सेल क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के जो सोर्स हैं दैट इज़ फ्रॉम वन ऑफ माय टीम मेंबर्स हु हैज़ रिसेंटली अटेंडेड अ डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू फॉर स्विगी एंड केपीएमजी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल को और चाहते हैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, डेली अपडेट्स मिलते रहें, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक पेज एज वेल। अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो आपको पता होगा मैं इस चैनल पे टाइम टू टाइम एंड रेगुलर बेसिस पे आपको बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस से जुड़े रिसेंटली जो भी जॉब्स अपडेट हैं फॉर फ्रेशर्स, इंटर्न्स एंड एक्सपीरियंस पीपल वो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और एट द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड शेयर बटन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी व्हाट आर दीज क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे और रिव्यू कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को रिलेटेड टू एक्सेल। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने रिसेंटली स्विगी में जो फ्रेशर डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू हुआ था उसके एक्सेल सेक्शन से पिक किए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समरी एंड इंस्ट्रक्शंस। The test consists of 6 exercises, total 10 questions. Duration of the test will be 30 minutes. Please read the instructions given in each exercise to solve the questions. And please ensure that the formulas used for obtaining the results are not deleted. यानी total 10 questions रहेंगे. Exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see the tabs. जिसमें से एक्सरसाइज 6 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आई थिंक 5 एंड एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 वुड बी रिलेटेड टू फॉर्मूलाज एंड 30 मिनट्स का ये टेस्ट रहेगा। एंड जो भी यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑलरेडी दिए होंगे हर शीट में। एंड जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज़ कर रहे हैं इसमें तो शीट शुड बी फॉर्मुलेटेड यानी उसे आपको स्पेशल पेज नहीं करना है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। दिस आर एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So let's solve this exercise 1. तो इसमें रिक्रूटर कहता है एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम कॉलम बी एंड अपडेट द सेम इन कॉलम सी। तो सर्विस रिक्वेस्ट है एंड आइडल टाइम है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डेज जिसमें से 100 जैसे 112 डेज 11 आवर 7 मिनट्स है, 104 डी 9 आवर 52 मिनट्स है। इसमें आपको ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इस कॉलम में लेके आनी है एंड आई थिंक दिस इज डेटा फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट सेंटर बैकग्राउंड। तो जान लेते हैं कैसे करते हैं। कई सारे तरीके हैं इसे करने के बट जो सबसे इजी फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमें करना क्या है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करनी है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करते हैं दैट इज टेक्स्ट बिफोर, यानी किसी भी स्पेसिफिक डेलिमीटर से पहले जो हमें टेक्स्ट लेना है वो हम इसमें डालते हैं। तो टेक्स्ट बिफोर इट सेज टेक्स्ट, यानी कहाँ से लेना है हमें, यहाँ से लेना है। व्हाट इज द डेलिमीटर? तो डेलिमीटर इज बेसिकली डी, जो वर्ड है या जो यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग है उससे आप लेते हैं एंड देन यू कैन क्लोज दिस एंड दिस इज हाउ यू गॉट इट 112 एंड लाइक इफ यू extract this, if you'll drag this formula it will give you 104 103 नंबर। तो ऐसे करके आप सारे नंबर ला सकते हैं। ये सारा मैंने जो फॉर्मूला है सारा ड्रैग कर लिया। नाउ यू कैन सी 194 93 डी। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज जो आपने अभी लिया है टेक्स्ट बिफोर दिस इज इन टेक्स्ट। तो इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है ये है, अगर आपके पास ये नंबर है इट इज लुकिंग लाइक अ नंबर बट इट कुड बी ए टेक्स्ट। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है इज नंबर, जहाँ पे आप चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला या जो स्पेसिफिक सेल के अंदर जो आपका कंटेंट है दैट इज अ टेक्स्ट और नंबर। तो जब हमने इसे इधर किया तो इट इज शोइंग फॉल्स। It means this is not a number, this is a text, because we asked is it a number, they said false. So what we can do is we can make this number text, make this text into value. So what we can do is simply write value and then parenthesis and then end parenthesis and there you go. So this is true, it means now this is number, and if you drag these all are numbers and you can drag this formula until 936. So this is how you can solve these questions, right? So you can just have this, and if you want I can share this sheet in the description box or I can provide you the link as well. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So I took more time, like more than I think 4 to 5 minutes, but yeah, you can do it easily
in just couple of minutes. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज सॉल्व्ड एंड इसको हमें फॉर्मूला में रहने देना है. एक्सरसाइज 2. Okay, so exercise 2 says please update the employee's salary in column C from the given table. So आपके पास एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, आपके पास एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय सैलरी, एंड दिस इज द टेबल फ्रॉम वेयर यू नीड टू लुक अप द सैलरी. राइट नाउ द प्रॉब्लम हियर इज आपके पास यहाँ पे दो नाम है, एक लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, जबकि यहाँ पे आपके पास एक ही नेम है, दैट इज आई थिंक फुल नेम कंबाइंड जॉइन. एंड इफ यू सी दिस अल्बानो, and if you'll find Albano, this is Albano. But yeah, I think so हमें first name और last name को merge करना है, and then we need to find the salary. So what we'll do, because recruiter ने यहाँ पे बोला है कि column C में हमें employee salary देनी है, तो we'll just put an additional column. इसे आप combine भी कर सकते हैं, but I'm just giving you a simple explanation. तो यहाँ पे हम करते हैं full name, और उसमें हमें करना क्या है, इन्हें दो तरीके से आप कर सकते हैं. अगर आपको दो कॉलम कंबाइन करने हैं, दो सेल ऐड करने हैं, कॉन्केटिनेट एक फॉर्मूला आता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ये मैंने ले लिया एक इनटू एंड के साइन लगा के भी कर सकते हैं. तो फुल नेम में फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट नेम, बट यहाँ पे जो कंबाइन करने की जो यू कैन से द डेलिमीटर इज कॉमा, जिसके थ्रू ये कंबाइन होंगे, एंड देन B4, B5, and also put an and Emily Precious. I don't know what this name is, but yeah, this is Theo, comma Emily Precious. This is how the name spells. And then आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे सारा का सारा, ये फॉर्मूला ड्राई कर लेंगे, तो you'll get all these names. ओके, तो यहाँ पे आप कॉन्केटिनेट एक फॉर्मूला है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट यार दिस इज द सिंपल वन. अब आपको क्या करना है, यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी लेनी है. राइट, तो अगर आपको सर्च करना है, पहले आप इस नंबर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट वन और नॉट. तो यहाँ पे हम चलेंगे, तो या वी आर गेटिंग हियर. सो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, वी लुकअप से, बट नाउ एक्स लुकअप इज इन ट्रेंड विच इज प्रीटी सिंपल फॉर्मूला टू यूज. तो यहाँ पे हम एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में है. वी लुकअप से कई बार लगता है कि आपको ये इंडेक्स मैच लगाना होता है, तो सिंपली एक्स लुकअप से कर लेते हैं. तो इक्वल टू एक्स लुकअप. Okay, it says x lookup value what we are looking for, so we are looking for this full name. Okay, then put a comma over here, and it says lookup array from where we are identifying or looking up this. So this is the employee name जहां से हम ये लेना चाहते हैं, employee name, and then again comma, and then it says return array. It means what return you are looking for, so we are looking for employee salary. Okay, and then we can close the parenthesis and we can get the salary. Okay, so let's test few results. So first we can see TU Emily Precious, and then this is 19,000, which is correct. Let's look for something in between. Let's look for this one, 13,000, here also 13,000, and let's look for Recto Donny, 15,000, and this is 15,000. Okay, so now this is also resolved, so you need not to special paste as per the instruction. You need to give the formula over here. Let's move to the exercise 3, which says please provide a number of errors in column B. Okay, so the column B should only contain numbers, but erroneously the data is updated in text for few rows. Okay, so if you'll see, because the data is two main data ranges, yeah, the simple one. So if you'll see, the salary bracket is in numbers, but this is in text, right? So I think the recruiter is saying that we need to identify the count of errors or count of cells which are in text, not in numericals. So easily we can see 1, 2, 3, 4, 5, and 6. That's how it is. But in this is Excel, so we need to, because this is pretty short data, but if we had long data, how would we resolve this using an Excel formula? Okay, so there are few ways. I'll show you two simple ways to do this. First, as I mentioned earlier, first we need to check, is this a number?
So this is the number. Okay, so what we're going to do is we are putting if condition. So what we are saying is if this is a number, it means if b5 a number, then give me 0 else 1, and we will close the parenthesis. Okay, now 0, and then you can drag the formula up till 5. Okay, so we can see we mentioned if this is a number, then put 0 else 1. So this is number, Excel throws 0, then this is 1. So what we can do is simply we can sum these errors. Okay, and this is how we are getting 6. There are 6 error in this specific column. For the another one, as I mentioned, we have 2 answers for this. I mean more than 2, but yeah, let me just give you 2 simple explanations. This is the first one in which we can just sum all these errors and we get the result of 6. And let's say this is answer 2, in which what we are going to do is simply using the count a function and value. Okay, and then we close it, minus count. Okay, and this is the result is 6. Now let me just tell you what is we are doing over here. So count a, difference between count a and count is, in count a, when you use count a, it count all these, whatever the specified limit you have or range you have chosen, it counts all the numbers, whether blank or there's a number or it's a text or a numerical or alphanumeric, it will count everything. Okay, and only counts those cells which have these numerical numbers. Okay, so what we are doing is we are simply counting all these numbers, that is 21, and counting only numbers where there is numerical values. So this is, I think, 50. So 21 minus 15 is equal to 6. That's how we got the answer. Okay, so this is exercise 3. Let's move to exercise 4. So it is any condition formatting to 21 as per condition mentioned. All odd numbers should be formatted in red and all even numbers should be formatted in green. तो यहाँ पे करना क्या है आपको, जो odd numbers हैं यानी 45, let's say 83 और let's say 359, इनको आपको रेड कलर करना है और इवन नंबर्स को आपको ग्रीन कलर करना है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ कंडीशन रिक्रूटर हैज गिवन. तो यहाँ पे सिंपली हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इसे रिजॉल्व करेंगे. तो ले लेते हैं इस एक्सेल को. इस सबसे पहले आपको डेटा चूजना है and आपको एक टेबल वन जो हेडर है चूज करना है. इस टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन वी विल गो टू rule, I guess. The new to define cells form पे यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करते हैं. तो फॉर्मूले से हम एक्सेल नॉर्मली यूज करते हैं हमने यूज किया. नाउ यहाँ पे हमने करना है कि हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे हम अगर किसी भी सेल को, यहाँ पे जो भी दिए गए सेल हैं उनको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर रिजल्ट 0 आता है इट मींस इट इज एन इवन नंबर, तो उसको हमें ग्रीन करना है, रेस्ट हमें रेड करना है. तो सिंपली यहाँ पे एक आता है मॉड विच इज बेसिकली मॉडुलस. और अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा पढ़ा है तो मॉडुलस में हम कर देंगे हैं जो भी हम 2 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज मॉड. And now I'll go to this A8, which you can see in the table, it's 6. So this is cell number A8. I'll go to A8 and I want to divide this A8 by 2. And if my result comes 0, it means if it's an even number, I need to format this. And how would I format this? Fill with green. Okay. And let's okay. And then okay. Okay, now you can see 6, 58, 14, 74, 46, all even numbers are in green. And same again, we will use the conditional formatting where again we can use a new rule and use a formula to determine. And again, I'll go to let's say modulus, and again I will A8, I will take the same cell number, that's A8, and I'll say if I divide it by 2 and if my remainder is 1, and it should be, it's an ordinal, so it
right? Okay, so here is the written, right? Well, sorry, and okay. Okay. So then how you use function formatting and again, these numbers for everybody. So this is the frequently asked questions in Swiggy and the retailers have experienced this commonly asked question. So you need to master information formatting if you are looking for a certificate. Okay. So the exercise 4, which is exercise 5. So, so the date column A, B, and it says sales in dollars at 1 3. So I think this is January date 1 2 3 and it says date column A, dates that column B says it's like it's 1 day and so it's basically analysis kind of question weighted analysis. So we do it normally when we create baseline or a trend line for a data and have here data communication or in sales. So this is basically this moving 7 8 moving average is basically to get a trend to see, right? So we can call over here and we say 7B moving average. So this is length 7 moving average is 7 of my sales. Okay. We can see till 7. What is my average? It's 350. So it's simply the simulation. You can just average and you can just take these numbers till 7 and solve the latest see let's say okay and I put this practices and I go 350 and you need to just drag the data like this sorry after 3 and last so if you see the it's last 7 days last 7 days again for 7 days so this is how we create this all your data. So if you see moving average moving last 7 days is so if we are analyzing selling and building on kits non-measurement, this is how we create base. Okay, so this is exercise 5 and this one say which but it looks like a different question. Next exercise 6 which is mentioned as twice. Let me just see write it the correct option. Okay, so they have given these questions and you need to find the answers. Okay, so what is the name of the function to check if the two strings are matching? Text, find, exact, none of them. So exact is the function by which you can, you know, you can find or you can match these strings. So let's suppose just let me just give you the example. So if I say analysis and analysis, so what I'll do is exact, comma, text2 and you get true. Okay, but if I'll write it this in caps, it will false because now I have written this in caps. While if it's because some people use also this function, simply equal this and just to check that both cells are same numbers or same something or not. So it is true. So you need to use the exact function most often because you can say this function when you are just comparing two cells, this is not case sensitive, while this exact function is case sensitive. So exact is the correct answer for this. So these are some just in just to give you the example. Let's move to the next one. Let's assume that you have a pivot table which has the count of yes and no. If I had to see the percentage of yes and percentage of no, then I need to do the following. So if you know about pivot table, which is basically you can say summary of the data, you can use a calculated function by which you can get the percentage of a yes or no. Okay.
Let's move to the next one. What is the use of goal seek function? Third question. Goal seek is a useless function. We change the formula for a set of cells, get the required value by changing the cells, and none of the above. So C is the right answer for this, because in goal seek function, what we do is we set a goal and then accordingly we change the value and we get the required value by changing the cell. Okay. So if someone asks you where is this goal seek function, so you can just simply go to data. I think you can see my screen where you can click on data, and then there is a option of in forecast. You can see what if analysis, where there's a goal seek, scenario manager, and data table. You can click on goal seek. You can set cells value, and by changing cell, this is what they have asked. Okay, let me just close this. Okay, and go to home again. All right. The fourth question is hyperlinks cannot be special shapes like stars and banners, drawing objects like rectangle, ovals, and pictures, all can be hyperlinks. So I think whatever my experience is or whatever I used is this is all can be hyperlinks. And the fifth question is, when you see a cell with a red triangle in the top right corner, what does this signify? There is an error in the cell. There is a comment associated with the cell. The font color of text in the cell is red. A formula cannot be entered into the cell. So there is a common comment associated with the cell. That's the correct answer. And if you like to see that, there's simply you need to click on any cell and you can just click right click and you can see this new comment. And let's say we says test. Okay, and we can just click it over here. Now we can see this uh you know a red triangle. This is a purple triangle though, but yeah, this is how it comes in previous Excel versions. I think these were few questions, 10 questions related to Excel. As I mentioned, like exercise 3 and exercise 4 and exercise 2, these are some frequently asked questions. So recruiter commonly ask questions revolving around these formulas. I hope you like this video, because this is something which we have not done in past. I mean, this is from what I usually publish in terms of job related updates. But if you like this video and if you want future videos like related to Excel, SQL, or Power BI exercises, interview questions and their answers, then definitely please comment in the section what you're looking for, and I'll try to make this video as simple and as comprehensive as possible. But thank you very much for watching this video. Have a great rest of your day.